Remember, a lot of questions have been raised whether there has been rampant corruption under Mamata Banerjee rule. Now, these are questions that the Congress used to ask one, the left definitely, and then you also had the BJP raising those questions, even saying that Mamata and her men were aware of all that corruption. Today, for the very first time, in a very surprise move, you've seen Mamata Banerjee almost accepting that there is rampant corruption. In fact, in her most unprecedented public rebuke of her own party colleagues, she goes on to name and shame ministers, MLAs, bureaucrats, DMs to cops. Now, she's accusing her minister, Shujit Bose, of allowing encroachment in his area, that is Salt Lake. She then goes on to embarrass the MLAs and the bureaucrats of Havra, accusing them of indulgence in corruption and also taking money, she said, in lieu of money. Tenders, she said, are being floated for the civic body without following any processes. She also then has accused her own leaders of not working and letting a mafia, quote-unquote, operate in the civic bodies in the state. Let's listen in to this big charge by Mamata Banerjee. রাজারহাটেও শুরু হয়েছে এনক্রোচমেন্ট। সল্লেকেও ইচ্ছা মতো সুজিত বোস লোক বসাচ্ছে কম্পিটিশন করে। কেন কেন বাইরের লোক বসবে? এআরডি অফিসের অপোজিটে, যদিও আপনাদের আমি ছবি দেখাই, ভাববেন না যে আমি উইদাউট কাগজপত্রে আপনাদের কাছে চলে এসেছি। ছবি দেখালে নিজেরাই লজ্জা পাবেন। এর জন্য কত দিতে হয়েছে? এই একদম পুরো এআরডি অফিসের সামনে সব এনক্রোচমেন্ট হয়ে গেছে। একটা করে তিপ্পল লাগাচ্ছে, একটা করে বসে হচ্ছে, একটা করে তিপ্পল লাগাচ্ছে, একটা করে বসে হচ্ছে। কেন? ওয়াই? বালি মিউনিসিপ্যালিটি, শ্রীমতী অমৃতা রায় বর্মন, এসডিও হাওড়া, তিনি কি করছেন? ওয়াই শি ইজ নট টেকিং কেয়ার? সলিড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা, এগুলো তো আমাদের আছে, রিসাইক্লিং হয়, ইচ্ছা মতো টেন্ডার করছেন নিজেরা। তার থেকে কতটা খাচ্ছেন আমি জানি না, কেউ খাচ্ছেন কেউ খাচ্ছেন না, নিশ্চয়ই দিয়ে টিয়ে খাচ্ছেন। গ্যাং আপ হয়ে গেছে একটা। আমি সরি, আমাকে এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে, আমি এর জন্য মোটেই খুশি নই, আমি দুঃখিত। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি হাওড়া পুলিশকে বলবো একটা তদন্ত করার জন্য, এবং চিফ সেক্রেটারিকে আমি অর্ডার দিচ্ছি, সেখানে যদি রাম শাম যদু মধু যাই হোক, ইভেন আমিও যদি হই, আমাকেও ছাড়বেন না। আমি জানতে চাই না কে দখল করেছে, কিভাবে করেছে, পেছনে কারা গ্যাং আপ করেছে এবং কিভাবে এগুলো হয়েছে, আমি এসব জানতে চাই। সরকারি সম্পত্তি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। লোভ বেড়ে যাচ্ছে, লোভটাকে কমাতে হবে। বাইরের লোকেরা এসে এখানে সব জমি জায়গা দখল করে নিচ্ছে, কারণ টাকার বিনিময়। এই গেলেই দেখতে পাই, পুলিশের চোখে পড়ে না, সব চোখে ঠুলি দিয়ে বসে আছে, আর ভাবে এগুলো কারো নজরে আসবে না। হাওড়ায় কোনো মিউনিসিপ্যালিটি নেই, এসডিওর আন্ডারে আছে, সুতরাং 4 জন এমএলএ ডাইরেক্টলি অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে। আমি আর নাম বলে লজ্জা দিলাম না। So just look at the situation. You have Mamata Banerjee, the sitting chief minister in Bengal, calling out corruption by her own men, by DMs under her, by the cops under her. Now, clearly, why is she doing this? That's the first obvious question anyone would ask. Is Mamata Banerjee right now nervous of the kind of blowback that perhaps she has received? And does she really believe that corruption has become that #1 rallying point? And does she fear that with the resurgent BJP in her state, she possibly could find it difficult to defend? Now, the BJP says that it's only a damage control exercise by Mamata Banerjee. This is only a PR exercise, and she wants to distance herself from all this corruption that they allege has happened only under Mamata Banerjee's rule. Let's see how the BJP has responded to that big remark by Mamata Banerjee. देखिए, ममता बनर्जी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उसके पहले
उनका इमेज को सुधारने का कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी ऐसा बहुत आदेश दिया, कोई आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। कारण ये लोग दिखाने के लिए आदेश है। कारण इतना साल से तो हम लोग देख रहा है, ये जो प्रशासनिक बैठक करके जो बड़ा बड़ा आवाज देते हैं, ये तो हम लोग 10 साल से देख रहा है। कोई पालन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी ममता बनर्जी का ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप आ गया, उनका परिवार का ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप आ गया, इसीलिए उस दुर्नीति का आरोप को नीचे पार्टी का लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को वो थोपने का कोशिश कर रहा है। So the BJP clearly believes that there is a larger political motive behind Mamata Banerjee making such a claim. But now let's take a moment and talk about the names. Let's mention the names one by one that have been repeated by Mamata Banerjee, and she's linking all of them, remember, to corruption. Now, Mamata Banerjee has a 70-minute briefing. In that 70-minute briefing, she starts taking names. She is naming first up Shujit Bose, who's the Fire Services Minister in the state of Bengal. Then she names her MLAs. Now, who are these MLAs? The name is Arup Roy. Then is Gautam Chaudhary. The other name she's taken is also Nandita Chaudhary. She's also accused the SDO, Amrita Roy Burman, of not doing her work and allegedly taking money for tenders. So this is what Mamata Banerjee claims. TMC leaders right now say that this is a great step. They are lauding Mamata Banerjee and they say that she's a model chief minister, because they also say that we do not have such chief ministers who publicly are ready to name and shame their corrupt netas. Clearly, the TMC has its own version to the entire story. देखिए, हम लोग का पार्टी ऐसी है, हमारा पार्टी में ममता जी सबसे बड़ा लीडर है और ममता जी शाखों में कोई दरबार होगा, सबको बोल देंगे तुम बर्बाद कर रहा, यही है। कभी देखा नहीं ऐसी एमएलए चीफ मिनिस्टर। अब इतना हमारा सोच है, भारत में सबसे बड़ा लीडर है ममता बनर्जी। वो देखिए, घर का आदमी को सबको सामने में बता दिया, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ठीक से चलो। यही तो है, जरूर वो लोग काम करेंगे, वो लोग को बताएंगे। दीदी तो बोल दिया एकदम, चलो अच्छा से काम करो, हम मानेंगे नहीं आप लोग। दीदी बता दिया ममता कि हम आप लोग को लाए, आप लोग को कराने होगा, आप करो, नहीं तो हम लोग दूसरा किसके ले लेंगे। And our colleague Shreya then also decided to speak to one of the MLAs who's been named by Mamata Banerjee publicly for corruption. His name is Arup Roy, and Shreya wanted to ask from him that whether he's really corrupt and how does he take this entire public rebuke coming in from Mamata Banerjee. স্যার অরূপ রয় কথা বলছেন? আমি শ্রেয়া বলছি टाइम्स नाउ থেকে मीडिया हाउस। सर, कल जो रिव्यू मीटिंग हुआ था, ममता बनर्जी ने बहुत सारे एमएलए का नाम लिया है, आपका भी नाम लिया गया था, और ममता बनर्जी ने ऐसे बोला है कि डोंट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो कभी डेवलपमेंट में इंटरफेयर नहीं किया। कभी हमारे पास जब लोग शिकायतें लेके आते हैं, जब मेरे घर में गंदा पानी आता है, ट्रेन नहीं छापा होता है, ऐसा जब कोई शिकायतें के लोग आते हैं, फोन करता है। तो सर, हावड़ा में क्या काम ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसे पर्सनली एमएलए का नाम लेके बोला है? 6 साल वोट नहीं है, एक आदमी के लिए संभव नहीं है पूरा कॉर्पोरेशन इलाका देखना, कमिश्नर 50 वार्ड देखना। तो इसीलिए काम तो ठीक से होता नहीं। लोग तो छपा कर रहा है, ये तो झूठ नहीं, ये तो सच है। और बीआईनी भी चल रहा है, दुर्नीति भी चल रहा है, ये तो हो रहा है। ये तो कोई बात तो सही है। तो आपको लगता है ममता बनर्जी ने जो बोला है सही बोला है और ठीक से काम भी होना चाहिए? हाँ, ठीक से काम तो होना चाहिए। और कैंडिडेट होने के जब इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। हमारे जो इंजीनियर है उसको ट्रांसफर पॉलिसी करना चाहिए कि यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। और नंबर 3 जो कैंडिडेट होगा कॉर्पोरेशन में, उसका वो अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काम करने का दिल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन।
Now, another person that was named by Mamata Banerjee was the chairman of the Cooch Behar municipality. There are serious charges of corruption against this person. What has Mamata Banerjee said? What has been the defense of the chairman? That and much more now. হঠাৎ করে রবি ঘোষ একদিন অ্যানাউন্স করে দিল কোচবিহারে ট্যাক্স বাড়ানো হলো। তুমি কি ভাই ট্যাক্স বাড়ানো? কোন মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের পারমিশন ছাড়া ট্যাক্স বাড়াতে পারবেন না, এটা আপনার করে খাওয়ার জায়গা নয়। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। We also do have Shreya, who's joining us live, I'm told, right now on the entire story. And Shreya, you've also been trying to speak to a lot of people who've been named by Mamata Banerjee. Now, what is the postscript and what is the pre-script to the entire story? Why did Mamata Banerjee go ahead by doing what she has done? You know, many in the TMC would say, Shreya, that this is a bold move by a sitting chief minister who's recognizing that there is corruption and she's publicly wanting to name and shame, her own people. But on the other side, one can even ask Shreya that if she's aware that there is corruption and these are people involved in corruption, why just stop at naming and shaming them? Why no action against them? Well, I think the most important question that we should be asking at this point in time is that, is Mamata Banerjee scared or is she a moral leader? Because remember, this time around we have seen that in the Lok Sabha election, TMC have done exceedingly well. Their number of seats has gone up. They have managed to bag 29 seats and the number of seats of the BJP has gone down from 18 to 11. But what is really surprising is that the BJP has done exceedingly well in the urban areas. If we look at the 144 wards that comes under Kolkata municipality, we see that BJP has taken a lead at least in 40 ward. Now, if you compare it with the picture that we had last year, this is really, a development by the BJP. They have really come a far way and they have done exceedingly well in the urban areas. So what really transpires is that Mamata Banerjee yesterday was holding this meeting. She was doing this review meeting of the urban areas, and there is a high anti-incumbency which we can see is there in the urban areas, not only in Kolkata, but also in the other urban areas of the state of West Bengal. So I think the right question to ask at this point in time is that, is Mamata Banerjee scared? Is she trying to, do a damage control and trying to take the favor of the people? Because it is really surprising where we see Mamata Banerjee guns for her own MLAs and ministers, names them and shames them. Yes. Although the TMC party has a different story to tell, they are saying that Mamata Banerjee is a moral leader. She's accepting the fault publicly. But we will also have to understand that BJP has done exceedingly well in the urban areas, and we have to understand that this can be one of the reasons why Mamata Banerjee did the review meeting in the first place. Okay. All right, and Shreya, I'm sure this is not the last word we've heard on the story. We trust you to keep us ahead. For the moment, only for one of time, I quickly thank you and we head into a break. On the other side, we are back with more on our live coverage from just outside the Vijay Chowk.